जैसे कि आप लोगों की बहुत कमेंट्स आए थे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर लाइव वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। प्लीज कीप ए नोट एंड अ पेन रेडी बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट कैलिब्रेशंस बात किए हैं। 45 मिनट्स विदाउट डिस्टर्बेंस वॉच कीजिए so that you guys will be pro like us in swing trading. Let's start the video now. जब भी कोई भी एनालिसिस करते हो, फर्स्ट चीज आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीओआई जोन इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो इन दिस पीओआई जोन मेजर सर्कमस्टांसेस क्या आइडेंटिफाई करना होगा आपको? हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इस पीओआई जोन ऑफ एक्शन जो बिल्ड होता है ना, उस एक्शन पॉइंट में हमेशा आपको बायर्स एंड सेलर्स दोनों का एसएल हंट होते हुए दिखती है, राइट? उस एसएल हंट के साथ आपको हमेशा ट्रेड ऑफ एक्शन में बने रहना चाहिए। सो एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट आप लोग कैरी फॉरवर्ड में याद रखना चाहिए, ये जानिए, राइट? एट दिस पॉइंट वेयर इज माय फर्स्ट पीओआई रेंज? नवंबर के मंथ में ये मेरा पीओआई रेंज ऑफ एक्शन था विद अ इंड्यूसमेंट इन ए डेली टाइम फ्रेम, करेक्ट? इसके साथ मार्केट क्या किया? मार्केट ने मूवमेंट अलोकेट किया लॉन्ग के तरफ, राइट? डेफिनेटली यहाँ पे सब जो बैठे थे लॉन्ग के तरफ उनको इस पॉइंट ऑफ एक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, बट इमीडिएटली अगर नोटिस करते हो मार्केट नीचे भी आई, नीचे आके एसएल भी हंट किया, करेक्ट? जब एसएल भी हंट हुआ सेलर्स का एंड बायर्स का, व्हाट आर द प्राइस एक्शंस आप लोगों को फॉलो करके चलना चाहिए, राइट? मेजर प्लान ऑफ एक्शन आपका हमेशा होना चाहिए कि इस पीओआई रेंज के बाजू में क्या आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई है या नहीं, राइट? सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी के लिए स्वीट एंड सिंपल में समझ लो कि हर एक रेड या ग्रीन कैंडल के साथ एक पार्टनर, या दो ग्रीन बना तो एक रेड बना, एक रेड बना तो दो ग्रीन, राइट? दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग, जो कि रिटेलर्स का बहुत फेवरेट चीज है, पैरेलल चैनल में रहना। सो इन दिस सिनेरियो मैं एक पैरेलल चैनल ड्रॉ आउट करता हूँ। सो दिस इज माय सर्कुलेटिंग सप्लाई जोन ऑफ एक्शन, राइट? जैसे ही इस पॉइंट ऑफ एक्शन में सर्कुलेटिंग सप्लाई जनरेट होता है, मेजरली आप लोगों को क्या फॉलो करके चलना होगा? यहाँ पे दो सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि क्या मेरा प्रीवियस हाई रेंज ब्रेक हुआ है? सेकंड, क्या इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रिटेलर्स को सपोर्ट से रेजिस्टेंस कन्वर्ट होते हुए दिखी है, राइट? बिकॉज मेजरली अगर जोन ऑफ एक्शन में 100% टच होते हुए दिखेगा सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस, समझ लो वो ट्रैप होगा। अगर टच नहीं होती है देन मार्केट कंटिन्यूटी में मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखेगी। जब कंटिन्यूटी में मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखेगी, मेजरली आप लोगों को क्या फॉलो करके चलना होगा? द सर्कमस्टेंशियल मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन। मतलब सर्कमस्टेंशियल प्लान ऑफ एक्शन मीन्स जो ब्रेक ऑफ अलोकेशन है, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर नहीं। जब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जनरेट होते हुए दिखती है, right? Is point of action में what is the major thing that you have to look? We have a major break of structure, with the major break of structure continuity. तो इस प्लान ऑफ एक्शन में हमेशा याद रखिए 100% क्लोजर देगा, उसके साथ कंटिन्यूटी, राइट? कंटिन्यूटी के साथ ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली डू वी हैव अ रिजेक्शन? यस, वी डू हैव अ रिजेक्शन। इज इट अ राइट रिजेक्शन? यस, डेफिनेटली एक राइट रिजेक्शन है। इसके साथ मेजर कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट अलोकेशन क्या होना चाहिए? हमेशा 150% एंड 200%। ये अभी हम डेली टाइम फ्रेम में है ऑन द एनालिसिस परस्पेक्टिव, ओके? सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमेशा याद रखिए जब भी एक सर्कमस्टांशियल मूव एविडेंस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आपको रीअलोकेशन में 300% प्लान ऑफ एक्शन देखना होता है, राइट? जब 300% प्लान ऑफ एक्शन जब देखते हो तब सर्कमस्टेंशियल स्विंग क्रिएट होती है। जब सर्कमस्टेंशियल स्विंग जब जनरेट होता है ना, तब मूवमेंट एक्शन प्लान डेवलप होते हुए दिखती है।
राइट। मूवमेंट एक्शन प्लान डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, प्रीवियस डिमांड रेंज, ये हमारा सप्लाई मूवमेंट है, करेक्ट। सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो हाफ पार्ट ऑफ रेंज है इन दिस सिनेरियो, ये एंटायर मेरा सर्कुलेटिंग सप्लाई है, राइट। इन दैट सर्कुलेटिंग सप्लाई, half part will be your retracement on 300%, राइट। जैसे ही ये हाफ पार्ट रिजेक्शन दिखने को मिलेगी, दैट विल बी अगेन अ रिवर्सल जोन ऑफ एक्शन। अगर मैं इस हाफ पार्ट एक्शन प्लान को मार्क करूं एंड उसके साथ कंटिन्यूटी में मूवमेंट देखूं, मेरे को यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा? पोस्ट 300%, what is the rejection that I am having? Exactly the 100% of the circulating supply, राइट। जब सर्कुलेटिंग सप्लाई का हाफ पार्ट ऑफ एक्शन जनरेट होते हुए दिखती है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? द प्रीवियस एक्शन अलोकेशन देखना होगा। प्रीवियस एक्शन अलोकेशन कहाँ पे है एट द करेंट स्टेट ऑफ माइंड? फ्रॉम द रेजिस्टेंस टू द एंटायर 300% जोन। This marking will act as your current movement plan, करेक्ट। सो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रीअलोकेशन देखोगे, रीअलोकेशन के साथ कंटिन्यूटी में बने रहोगे, राइट। ये होगा आपका डेली एनालिसिस का स्विंग अलोकेशन। जैसे कि डेली एनालिसिस का स्विंग अलोकेट होता है, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट। हमारा 50% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई का मूवमेंट है, कौन सा पॉइंट है? बायर्स अलोकेशन, राइट। इस बायर्स अलोकेशन के साथ फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी थी? इस पॉइंट ऑफ एक्शन। एंड ये कैसे एक्ट होगा? जो प्रीवियस सप्लाई है, वो प्रीवियस सप्लाई हमारा करंट मूवमेंट में डिमांड के जैसे एक्ट करेगा। इन दिस सिनेरियो, दिस इज माय प्रीवियस सप्लाई। अगर मैं प्रीवियस सप्लाई की मार्किंग देखूं, एग्जैक्टली द डिमांड जनरेट होती है। एंड ए प्रीवियस सप्लाई कहां से आएगा? द सप्लाई विल एक्ट फ्रॉम द इंड्यूसमेंट रेंज ऑफ एक्शन। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके देखूं, क्या ये मेरा जोन ऑफ एक्शन में है? यस, जोन ऑफ एक्शन में है, राइट। विद दिस रिजेक्शन एट 100% कितना मिलेगा? हमेशा जो हमारा प्रीवियस डिमांड अलोकेशन है, उतना ही आपको करंट स्टेट ऑफ एक्शन में दिखने को मिलेगी, राइट। जैसे कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें अलोकेशन दिखने को मिला, हम यहाँ पे टू लेवल्स ऑफ कंडक्ट को अलोकेट करेंगे। कैसे? एट द सिनेरियो वन, ये मेरा सप्लाई है, राइट। ये मेरा सरप्लस नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूटी में बना है, तो हम इस पॉइंट ऑफ एक्शन को रिट्रेसमेंट के साथ अलोकेट करेंगे, right? So at this current scenario, what is my movement plan of action? Do we have a rejection? Yes, definitely I have a rejection. So I will mark out the rejection. But is this the right one? Definitely, अगर आप डे टू डे इंट्राडे में ट्रेड ऑफ अलोकेशन देख के चल रहे हो, ये सही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, what is the major point of interest that you will be looking? The major point of interest आप देखोगे कि मेरा सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो 50% प्लान ऑफ एक्शन है, क्या उसका 100 to 150% का रिजेक्शन मेरे को मिला है या नहीं। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिजेक्शन नहीं मिलता है, then we will look for the next. So at the current stage, मेरा circulating supply का 50% कहाँ पे है? इस point of action है, right? इस point of action में exact rejection मिला है, right? इस rejection के साथ first allocation point होगा, right? With the first allocation point, क्या मेरे को 100% closure दिया है यहाँ पे? Yes, definitely दिया है। With the 100% closure, what I'll be looking? 150%. क्या मेरे पास 150% रिजेक्शन है यहाँ पे? डेफिनेटली आई एम हैविंग 150% रिजेक्शन, करेक्ट। सो इस बेसिस में मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जो कि मेरा एंटायर मूवमेंट अलोकेशन ऑफ पोस्ट द रिटेलर्स हंट will be your reallocation point. In this scenario, 150% will be your surplus. 150% surplus के साथ continuity 200% का target. So this is how you look into the circumstances of
एंटायर डेली स्विंग एनालिसिस, राइट? जैसे ही हमारे पास डेली स्विंग एनालिसिस आया, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल बी फॉलोइंग? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है? द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन इज मैथमेटिकल नंबर्स। मैथमेटिकल नंबर्स के लिए हमारा स्विंग लो ये होगा, हमारा स्विंग हाई सर्कुलेटिंग सप्लाई की हाई पॉइंट होगी, एंड रिट्रेसमेंट विल बी सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो रिट्रेसमेंट कन्वर्ट नहीं होते हुए दिखा है, वो हमारा मेजर retracement point of action होगा। So what is the swing high? The swing high is 2786.480, swing low is 2574.975, and my retracement point is 2731.120। इसके साथ मेरा intermediate ratio is at 3170.320, राइट? सो ये आप कैलकुलेशन कर लेना। उसके साथ कंटिन्यूटी में नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए मेरा? 4 आवर्स में आएंगे। 4 आवर्स में मेजर सर्कमस्टांशियल मूवमेंट तो आपको मिल गया है, राइट? इसके साथ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी आइडेंटिफाइंग? बिकॉज आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा विद द पीओआई रेंज स्टार्ट होगा। इन दिस सिनेरियो आई हैव माय सेकंड पीओआई रेंज, राइट? जैसे ही मेरा सेकंड पीओआई रेंज ऑफ एक्शन बिल्ड हुआ, व्हाट इज द मेजर थिंग? एसएल किसका लिया है यहाँ पे? सेलर्स का, उसके साथ बायर्स का, राइट? बायर्स अलोकेशन पॉइंट के साथ रीसर्कमस्टेंशियल मूवमेंट, मतलब ये मेरा फर्स्ट 100% एक्शन प्लान होता है। विद द एक्शन प्लान द मूवमेंट ऑफ सेकंड, राइट? विद द सेकंड प्लान ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगी? 150% की रिजेक्शन, राइट? विद द 150% रिजेक्शन, कंटिन्यूटी अलोकेशन, राइट? जब मैं कंटिन्यूटी अलोकेशन में अलोकेट करूंगा, व्हाट आर द मेजर थिंग्स आप लोगों को यहाँ पे नोटिस करते हुए दिखेंगे? A rejection. And what is this rejection called as? This rejection is called as surplus movement. Surplus supply, राइट? जब सरप्लस सप्लाई जनरेट होता है, हमेशा याद रखिए एक छोटा सा पीओआई रेंज ऑफ एक्शन जनरेट होगा। उस पीओआई एक्ट ऑफ मूवमेंट में नेक्स्ट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन दिखने को मिलेगी। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिटेलर्स को हर एक रेजिस्टेंस में ट्रैप करेगा। उसके साथ कंटिन्यूटी कितना दिखने को मिलेगी आपको? जितना एंटायर मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन ऑफ सरप्लस है, उतना पूरा मूवमेंट एक्शन प्लान आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। इन दिस सिनेरियो दिस इज माय नेक्स्ट 100% ऑफ सरप्लस मूवमेंट प्लान, राइट? जब मेरा सरप्लस मूवमेंट प्लान ऑफ अलोकेशन हुआ, व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट आई विल बी लुकिंग? क्या ये 100% कवर अप हुआ? With the 100%, the next point of interest will be taken under the consideration of previous, right? Previous action plan में मेरा POA range क्या है? मेरा entire POA range will act as the first point, right? The first point of interest को mark out करेंगे, right? With the mark out, do we have a breakthrough? With the breakthrough, क्या यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन डेवलप होते हुए दिखा है? यस, डेफिनेटली दिखा है। विद दैट स्मॉल प्लान ऑफ एक्शन, सेकेंड इंडिकेशन विल बी योर 200%। डू वी हैव a rejection of 200% over here? Yes, we do. So this will be acting as our major demand allocation again, right? So in this point of interest, this will be my 200% demand. राइट? विद द 200% डिमांड, नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या होगा हमारे पास? द मूवमेंट सर्कमस्टांशियल बिल्ड। क्या हमारे पास यहाँ पे अलोकेशन में प्रेशर किसका है? बाइंग, बाइंग। डेफिनेटली यहाँ पे विक क्रिएट हुआ है टुवर्ड्स द सेलिंग एज वेल, बट ये सेलिंग विक्स जो क्रिएट हुए हैं, ये एक ट्रैप ऑफ अलोकेशन है। ट्रैप ऑफ अलोकेशन कैसे? अगर मैं फिब लेवल लेता हूँ, टॉप टू बॉटम ड्रॉ करता हूँ, what do we notice? Retailers execute the trade at 0.5 and 0.6. That is the plan of action which has been created at this point.
राइट। इस पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा। द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी विद द प्रीवियस सरप्लस मूवमेंट। सो इस सिनेरियो में ये मेरा एंटायर सरप्लस मूवमेंट है। एंटायर सरप्लस मूवमेंट will act as my new supply because we have a retracement. With the retracement continuity, what do we notice? We have a 100% break। 100% break के साथ merger के साथ continuity। If I look in perspective of the mergers, what do we notice? Again we have a breakthrough, right? Breakthrough point of interest, allocation one। with the allocation one यहाँ पे entry point of action create होती है। with the entry point of action, what will be the plan of action? Entry point is to be one setup and continuity। In this scenario, where do we have a S to B1 setup? अगर markout में देखूं तो this is the plan of action, right? जैसे ही मेरे पास यहाँ पे plan of action develop होते हुए दिखी है, what is the next step that I'll be following? Next step is plan of action में continuity of the movement। Continuity definitely बीच बीच में retracement आया है, 4 hours है, swing trade है, definitely आप लोगों को confuse नहीं होना है इस point of action में। आप लोगों को सिर्फ अलोकेट करके चलना है हर एक मूवमेंट एक्शन प्लान। इन दिस सिनेरियो मेरा एक्शन प्लान ऑफ कंडक्ट क्या है? एट द करेंट स्टेज ये मेरा डिमांड है। ये डिमांड को वी विल लुक इनटू द रीस्पेक्ट्रो रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। राइट, मैंने कुछ नया किया, जो पुराना डिमांड है वही कंटिन्यूटी में मूवमेंट में गया। राइट, जैसे ही कंटिन्यूटी में मूवमेंट किया है, डेफिनेटली वेयर आर वी लुकिंग फॉर एन एक्शन प्लान एट द करंट स्टेज? द एक्शन प्लान इज एग्जैक्टली एट 200% सप्लाई। राइट, इन दिस 200% सप्लाई व्हाट इज द मेजर थिंग दैट यू विल बी नोटिसिंग? क्या हमारे पास इस प्लान ऑफ एक्शन में 150% का रिजेक्शन है? यस, आई विल शोकेस यू दैट ऑल्सो। 150% and 200%। right? If I look in the perspective of to the previous point of allocation, where will be my point of interest? The point of interest is over here. Do we have a rejection from the same spot? We do have a rejection from the same spot. So that will be your lookout of market analysis, right? जैसे ही market ने rejection लिया, 200% cover up किया, क्या किया यहाँ पे? Market structure completed the daily time frame, राइट? डेली टाइम फ्रेम के मूवमेंट के साथ रिकंटिन्यूटी ऑफ द बिल्ड कितना दिखाएगा? जो कि हमेशा याद रखना, हमारा प्रीवियस डिमांड रेंज जो कि सरप्लस 100% से जो लिया है, दैट विल एक्ट एज योर करंट पॉइंट, right? In this state of action, this is my first point of invitation. With the first point of invitation, 150% rejection, right? So ये हमारा allocation होगी, हमेशा याद रखिए। With this, the major action point will be your 150% breakthrough. With the 150% breakthrough, 200% rejection, right? So this is the plan of actions that will be taken under the consideration of the previous। So, is point of interest में what are the major circumstances which will be taken under the consideration? The major circumstances will be into the previous points। कैसे? We will look into that next, right? ये हमारा 150% डिमांड है। With the 150% डिमांड, 200% डिमांड। क्या मार्केट ने रिजेक्शन लिया है यहाँ पे? डेफिनेटली मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रिजेक्शन लेते हुए दिखी है, राइट? दिस विल बी द सरप्लस मूवमेंट एक्शन प्लान। जैसे ही सरप्लस एक्शन प्लान जनरेट होते हुए दिखता है, क्या नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो होगा आपका? जो कि आपका प्रीवियस एंटायर मूवमेंट एक्शन प्लान ऑफ द फर्स्ट डिमांड ऑफ द सरप्लस, वो होगी कंटिन्यूटी में रीबैकिंग, राइट? रीबैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? रीबैकिंग स्ट्रक्चर जो कि
हर एक रिटेलर्स को ट्रैप अलोकेट में बिठाता है। ट्रैप अलोकेट मतलब एवरीवन हैज अ फोमो, राइट? जब फोमो क्रिएट होता है मार्केट में, क्या होती है? मार्केट में पैनिक दिखती है। जब पैनिक दिखती है, रिटेलर्स हमेशा रनिंग ट्रेड में शॉर्ट की तरफ दिखेंगे, बट मार्केट विल क्रिएट बैक द एक्शन प्लान टू री इवेल्युएट द लिक्विडिटी। रीइवेलुएट द लिक्विडिटी जब जनरेट होने को दिखती है, द फर्स्ट एक्शन प्लान विल ऑलवेज बी 100%. With the 100% structure, 150% will be the breakthrough. In this scenario, do we have a 150% breakthrough? Yes, we do. So what is this movement called as? This movement is called as evaluate structure of liquidity. Right? This will always act in perspective of 100% demand closure. With the 100% demand closure, 150% will be your target plan. 200% is a very rare scenario. इस structure में work होना. Okay, so this is my 150 with the 150, 100. Right? इस point of interest में movement allocate होती है and continuity में develop होती है. Right? उसी उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शंस क्या होगा हमारा? द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन प्लान विल बी इन अलोकेशन ऑफ द प्रेशर्स, राइट? हमारा 4 आवर स्ट्रक्चर क्लियर है? इस 4 आवर स्ट्रक्चर के साथ मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखने को मिलेगी? मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रीवियस रेंज ऑफ कंडक्ट के साथ बिल्ड होते हुए दिखेगा। प्रीवियस रेंज ऑफ कंडक्ट मतलब जो कि हर एक रिटेलर को ट्रैप किया है, राइट? ये हमारा ट्रैप मूवमेंट है। सो इस ट्रैप मूवमेंट अलोकेशन को हम बोलेंगे प्रीवियस प्रेशर अलोकेशन. If we notice, what do we see over here? The green candle has exactly created the movement plan as per the evaluation of the previous, right? जब evaluation of the previous create होती है, हमेशा याद रखना the movement action plan will be as per the requirements of the next. मतलब liquidity calibration generate होते हुए दिखेगी। जब एक कैंडल शॉर्ट के तरफ बिल्ड हुआ है, उसके साथ इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन में जब नेक्स्ट कैंडल कवर अप लेती है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी कैलिब्रेशन. ओके, इस कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मेजरली क्या होता है? हाई वॉल्यूम ट्रेडेबल आइसबर्ग्स होते हैं. इस आइसबर्ग ऑर्डर्स के साथ market will just create a panic movement for the retailers and continuity in the structure, right? So here this point of action was taken under the consideration of liquidity calibration. Okay, so if you notice, there was a green candle, immediate closure was the red candle. So in this point of interest, what are the major things that needs to be focused? किस चीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए? जब लिक्विडिटी कैलिब्रेशन जनरेट होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस मार्केट हमारा 200% सप्लाई कहाँ पे कंप्लीट किया था? ये हमारा 200% सप्लाई रेंज ऑफ एक्ट है, राइट? सो ये जो रिजेक्शन पॉइंट रहेगी, हमेशा याद रखिए, यही रिजेक्शन पॉइंट कंटिन्यूटी में रीबिल्ड स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगी, राइट? रिबाउंड इफेक्ट बोलते हैं इसे. इस रिबाउंड इफेक्ट विल बी ऑलवेज फ्रॉम योर प्रीवियस पॉइंट. जब भी रिबाउंड इफेक्ट दिखता है, 200% का रेंज मार्किंग के साथ ही रिबाउंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए.
Okay, once the rebound effect is identified, the movement structure plan कितना होगा? Because this is a swing trade में हमेशा एक चीज याद लेके चलो, the movement plan of action of entire 200 supply, मतलब मेरा जो कैंडल अलोकेशन है यहाँ पे सप्लाई का 200% का, that will act as my current movement plan of action. राइट, सो इन दिस सिनेरियो ये मेरा एंटायर 200% का फर्स्ट रेंज ऑफ एक्ट है. राइट, इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी बिल्ट है, विद द कंटिन्यूटी रीस्ट्रक्चर एनालिसिस होने के बाद, विच मंथ इज इट गोइंग ऑन? अप्रैल. सीजनल अलोकेशन, मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन. मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन जब क्रिएट होता है, क्या होता है? मार्केट हमेशा 150% एंड 200% रिजेक्शन लेती है. Right, so this is the plan of actions that you guys needs to have always in the spectrum movement allocation. Right, यहाँ पे spectrum movement allocation will be identified through the break. If you notice, we have a rejection, and अगर ये rejection कितना perspective में है अगर notice करोगे, it is of 300 pips, and no one has the point of interest to give market SL a 300 pips. Right, with this majorly क्या देखना चाहिए हमें? The major action plan हमें identify करना होगा, which will be acting as my current zone of conduct. Right, current zone of conduct को कैसे identify करेंगे? With the previous action plan. Right, with the previous action plan, what is the major point of interest जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे? Structure imbalance point of interest. Minimality, 200% minimality. Right, and minimality हमारे पास कहाँ पे थी? यहाँ पे at this point of interest, the minimality zone of action was acted into the previous zone of this movement. Right, अगर in depth करूँगा, जो rebound effect है, that will act as my current movement action plan of minimality zone. Right, with this minimality zone of action, market ने यहाँ पे क्या allocate करते हुए दिखी है हमें? Movement breakthrough of 200% and continuity. Right, in this structure plan of analysis, where is the targets that we are having at the current stage? हमारा targets आके daily time frame का next movement plan होगा. In this scenario, जो कि आके first target is at 3180, second target is at 3280. Right, इस point of interest के साथ what is the next step? सो इन 1 आवर हमें मेजरली किस चीजों को आइडेंटिफाई करके चलना होगा नेक्स्ट? राइट, मेजरली यहाँ पे हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई जहाँ पे बिल्ड होती है इन द करंट स्टेट ऑफ एक्शंस, सर्कुलेटिंग सप्लाई मूवमेंट एक्शन प्लान में जब आती है, इन द ब्रेक थ्रू ऑफ एक्शन प्लान, वो कवर अप लेती है एंटायर सर्कुलेटिंग सप्लाई का. राइट, जब एंटायर सर्कुलेटिंग सप्लाई का कवर अप लेती है, मूवमेंट में एक ब्रेक थ्रू जनरेट होते हुए दिखता है, एंड ये सिर्फ गोल्ड में नहीं, क्रिप्टो में भी फॉलो होती है, इंडियन मार्केट्स में भी फॉलो होती है, कमोडिटीज में भी फॉलो होती है. with that it will follow in the structures of through the equities as well. राइट, सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारा पास सर्कुलेटिंग सप्लाई इस जोन ऑफ एक्शन में जनरेट होते हुए दिखी थी. इस जोन ऑफ एक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यूटी में रीबिल्ड अलोकेशन दिखने को मिले था. रीबिल्ड अलोकेशन में हमेशा क्या होता है? जो एंटायर मूवमेंट एक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई, 50% markout. With the 50% markout, reallocation will be your plan of action, जो कि in this scenario मेरा setup plan है. With the setup plan, the break.
right? In this allocation perspective, previous range of movement plan was as per the same. With that continuity, with the continuity, what did market tend to showcase? Market tend to showcase a break and continue. In the break and continue, 150% range out, right? With the 150% range out, what are the major things that needs to be taken in consideration of the follow through? Where will be the action plan? The action plan will be in the liquidity calibration of 4 hours. In the state of action, this is my 4 hours liquidity calibration of the supply that will act as my current movement, because जिस तरफ का liquidity hunt होती है उसी तरफ का liquidity calibration candle resuffice होती है. In this scenario, do we have a rejection? Yes, definitely we do have a rejection. With the rejection perspective, what do we notice? We have a small range of selling pressure over here. Retailers को यहाँ पे trap किया फिर से. क्यों trap किया retailers को? Because all the retailers has a resistance line drawn. Right? जब resistance line draw होती है, break एक रेजिस्टेंस लाइन अगर आप ड्रॉ किए हो, क्या करोगे? ब्रेक होने के बाद आप सोचोगे ओके यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, नीचे के लिए बैठना है. आप नीचे के लिए बैठे, बट मार्केट में यहाँ पे बिठा के इमीडिएटली मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन जनरेट किया. राइट, दिस कैंडल इज अ रेप्लिका ऑफ व्हाट? Liquidity calibration. Right, with the liquidity calibration, what is the next step of actions that needs to be followed? With the liquidity calibration, what do we have in between of the 100% zone of action? A minimality act. With the minimality act of plan, market क्या किया? 100% zone of action create की. With the 100% zone of action, do we have the 150% rejection? Right, we do. So what will be the plan of action over here? We will reallocate the spectrum. Once we reallocate the spectrum, what is the point of interest that will be acting at the current stage? The point of interest जो act करेगा, that will be with the 50% repoint of movement. 50% repoint of movement मतलब जो भी allocation में दिखने को मिलती है, that will act as your current. 150% supply with 150% of the supply of the minimality, 200% rejection. So this will be the 1 hour plan of action at the current state. With this current plan of actions, what are the market indications at the current point? Market क्या किया है यहाँ पे? Market एक rebuild structure के साथ हर एक point of interest में यहाँ पे हर एक लोगों को बाहर किया, correct? उसके साथ continuity in the movement generate करते हुए दिखी थी. So इस point of actions में what are the major things that you will be focusing on? चलो हमारा 4 hours का मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन तो हिट हो गया, सो विल रिमूव दिस लेवल. विद दिस लेवल रिमूवमेंट हमें यहाँ पे क्या दिखने को मिलती है? हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्रीवियस जोन ऑफ एक्शन. प्रीवियस जोन ऑफ एक्शन में each and every point will act as your current point. Each and every point will act as your current point. How? 15 minutes में चलिए दिखा. Right, with this zone of act, what is the market right to indicating you? The market has tried to indicate you the movement plan of action. Right, movement plan of action कैसे allocation में दिखाया है यहाँ पे? With the previous regeneration point. Right,
With the previous regeneration point, this was our liquidity. With this liquidity, this is our 150% supply minimality, 200% supply minimality. With that continuity of the formation. In this continuity of the formation, कल के दिन में हमने जो जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया था, रीजन ऑफ प्लान क्या है? We will start with the bottom lineup, right? With the bottom lineup, the movement calibrate हुआ था यहाँ पे. This will be the first point of interest. With the first point of interest, market में restructure allocate हुआ था. Restructure allocate होने के बाद we had a 150% rejection. With the 150% rejection, we had a breakthrough. Reason? At the first point of supply, there was a movement structure. Yes, we had a movement structure. With this movement structure, हमें majorly क्या identify करना है? जो कि previous range of conduct. At this point of action, मेरे पास एक minimality zone of action generate होते हुए दिखा था. With the minimality zone of action, 150% rejection allocate होगा. In this scenario, this will act as my current 150%, right? With the current 150% zone of action, what did market tend to do? Market tend to create a breakthrough structure. With a breakthrough structure, re-identification of liquidity analysis and liquidity calibration. At this state of action, what do we notice? Do we have a liquidity calibration? Yes. If I zoom you, I can show you that we had a liquidity calibration. Just give me a moment. Right? So with this point of interest, where was the liquidity calibration over here? The liquidity calibration was at this point of action. When there is a liquidity calibration, what does the market tend to do? Market tend to recreate the structure with the plan. When there is a recreate structure with the plan of action, what is the first movement market generate करेगी? जो कि previous interest point range है, that will act as your current. With the current interest point range, market continued with the continuity. हमारे पास दो action plan out था with the 100% surplus of the supply. 100% supply. What is the next step? 150% minimality zone. I'll just take it from the previous, right? उसके साथ 200% minimality zone. With this point of interest, first trade of execution was with S2B1 over here, live trade. Then before the live, we had an execution at this point of action with three wing pool. Right? With three wing pool, what is the setup that the market had created? एक second रुको. Three wing pull. Right? Three wing pull के साथ movement allocate हुआ था. With the movement allocation continuity, with the continuity surplus minimality zone of action 150% 200% calibrate हुई थी. With the calibration, the previous act of point हमारा जो POI range से जो retailers को trap किया था, उसी point of interest के साथ we had executed a S2B1 setup trade over here. With the S2B1 setup, there was a 250 pip trade of execution. 250 pip trade of execution के साथ we had one of the 200% demand at this point of action. उसके साथ continuity, correct? So with this, what are the next steps that needs to be taken under the consideration? Through the previous action plan. ये हमारा 200% का demand zone था.
with the demand zone, what will be the next step? The continuity of the previous, right? The previous action plan मतलब जो हमारे पास सरप्लस सप्लाई कहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी है, the surplus movement action plan was into the previous of this 200%, right? With this surplus movement identification, first point of interest कितना था? 100% का. With the 100%, we had 150%. With the 150%, 200% rejection, right? What is the next step? It has been followed. The followment will always be in perspective of to the next. So 150% rejection कल के दिन में दिखने को मिली थी. With the rejection point, 200% was the spectrum. And where exactly the 200% rejection that you are identifying at the current state is into the previous point of interest of next, right? What are the next steps of action plan which will be in the act? The act will be into the previous to the next to the next. So this is the allocations that needs to be taken under the consideration. With the consideration moment, यहाँ पे एक डिमांड जनरेट होते हुए दिखी है. ये डिमांड एक्शन प्लान किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है? ये डिमांड एक्शन प्लान was of the surplus movement. The surplus movement will act as the current, right? Is point of interest में, is this the right allocation? No, we don't have a break of structure. हमेशा body allocate करके चलना, right? With this point, the market tend to break and continue. We have a circulating supply. Circulating supply का next point of interest will be acting as my 150%. In this scenario, this will be a closure of 50% range. With the 50% range, the break with the break continuity, right? In this zone of action, what is the major things that needs to be taken care of? Break and continue, 150% allocation, and the previous entire movement in the plan, right? With this, continuity of the movement is taken under the previous surplus of 150% range. With the 150% range, rebook allocation at the spectrum with the spectrum continuity. Rebook allocation with the spectrum continuity, right? At this point of interest, what do we notice? We have a plan of actions which will be taken under the consideration of previous. Okay, so this is how you look for an allocation of a previous to the current. Okay, surplus supply with the surplus supply, surplus 100% supply with the surplus 100% supply, 200% coverage. With the 200% coverage point of action, the demand range was acted in the point of 1 and completion of the 2. Right, with this point of interest, the movement allocation is identified. Here, the demand zone of action is 150%. With the 150%, calibration move with the calibration move, 100% with the 100% continuity. Right, in the continuity plan of action, the surplus will be acted through the previous. Okay.
आज के दिन का ट्रेड वी हैड एग्जीक्यूटेड विद द लाइव एक्शन प्लान ऑफ S2B1 setup. With S2B1 setup, the market has given the movement of 530 pips. हमेशा एक चीज याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग में एक ही चीज काम आती है, वो है पेशेंस एंड मैथमेटिकल प्रिसिशंस। ये ट्रेड हमने 9th के दिन जो एग्जीक्यूट किया था, लाइव स्ट्रीम पे भी है, कंटिन्यूटी में 10th के दिन में भी है, 10th के साथ 11th के लाइव स्ट्रीमिंग में भी है। एंट्री सेटअप्स ऑफ एड ऑन पॉइंट्स, राइट। एंटायर मूवमेंट हमने कैप्चर किया था 2660 पिप्स एट द करंट स्टेज, अगर आप नोटिस कर रहे हो। सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ ये अभी भी आगे जाने वाली है 3260 तक। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके वजह से हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। कोई भी डाउट्स है इन रिगार्ड्स टू मार्केट स्विंग ट्रेडिंग, प्लीज डू बताइए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फियरलेस ट्रेडिंग चाहिए। फियरलेस ट्रेडिंग के साथ आपको इमोशनल लेस ट्रेडिंग चाहिए। इमोशनल लेस ट्रेडिंग में एक ही चीज काम आती है, वो है जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना। क्वालिटी नहीं है ट्रेडर्स के, राइट। पोकर फेस कैरी कीजिए जब तक मैथमेटिकल टारगेट्स हिट नहीं होते, एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल, फॉलो द रिस्क टू रिवॉर्ड, ट्रेड पेशेंसफुली विद द कामनेस। फोमो ट्रेड्स मत लीजिए, रनिंग कैंडल्स में ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटीज के साथ ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।